हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर DI ओपन क्लासरूम। आज हम दो केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन रहेगा दैट इज कोल्ब्स रिएक्शन और दूसरा रहेगा यहाँ पे राइमर टाइमन रिएक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड द रिएक्शन। द फर्स्ट रिएक्शन आई गोइंग टू डिस्कस दैट इज कोल्ब्स रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोल्ब्स रिएक्शन। तो कोल्ब्स रिएक्शन में होता क्या है, पहले हमको फिनॉल लेना है और फिनॉल को आपको ट्रीट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये रहा हमारा फिनॉल और इसको आपको ट्रीट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH। जैसे हमको बताया कि फिनॉल इज एसिडिक कंपाउंड, एक एसिडिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे जो H रहेगा दैट इज एसिडिक प्रोटॉन और यहाँ पे हम ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज अ बेस। एंड वी गेट ऑब्वियसली जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो हमको मिलता है यहाँ पे एक salt or water. So we get here ONA. This should be ionic compound, sodium phenoxide. Along with that we get here water molecule. एक water molecule मिल जाएगा। तो रहा क्वेश्चन यहाँ पे, which one is more acidic, or you can say that which one is more reactive towards the electrophilic substitution reaction, phenol या sodium phenol? Sodium phenate में होता क्या है यहाँ पे, sodium phenate में जो negative charge on the oxygen is there, it delocalize into the benzene ring, enhance the electron density at R and para positions. But in case of phenol, when the delocalization takes place, the delocalization is due to the lone pair of electron present on the oxygen. And when it donates the lone pair of electron to the benzene, oxygen gains here positive charge. Therefore, looking at these two molecules, we can conclude that the sodium phenate is more reactive towards the electrophilic substitution reaction. Okay. Next, we have to take this sodium phenate and let me take this H2O here, minus H2 I will write, and this sodium phenate is allowed to react with carbon dioxide, that is oxygen double bond C double bond O, and we have to maintain around 6 to 7 atm pressure, around 413 Kelvin of temperature. A very high temperature and high pressure is required for this. And during this process what happens, the negative charge which is present on the oxygen get delocalized into the benzene ring, and the pi bond present in the benzene get migrate towards electron deficient, towards this electron deficient carbon. This is electron deficient because this carbon is connected with two electronegative oxygens, and therefore we get here oxygen gains negative charge, and by that we get here another product that is यहाँ पे pi bond नहीं रहेगा, so here it should be double bond O, and here is two bonds, here is one hydrogen, and here we get C double bond O minus. तो ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म हुआ है ये हाईली अनस्टेबल रहेगा क्योंकि द मॉलिक्यूल का जो एरोमेटिसिटी है वो लॉस हो गया, क्योंकि आप देख सकते हो sp2 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 और ये sp3 है, उसका शेप अलग रहेगा और ये आउट ऑफ प्लेन रहेगा। तो इसीलिए ये जो हाइड्रोजन है क्विकली ये बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, तो ऑक्सीजन अपना बॉन्ड वापस लेता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है आई विल राइट हियर, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो रहेगा आई विल राइट हियर। तो यहाँ पे फिर से हमको सोडियम फिनेट लिखना है, दिस इज ONA प्लस माइनस और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि मुझे यहाँ पे जो हाइड्रोजन मैंने लिखा है कहाँ पे अटैच करना है। लेट इट बी, आई विल टेक ऑप्शन हियर। तो मेरे पास एक यहाँ पे हाइड्रोजन H प्लस निकल गया है, तो उसको अटैक करने के लिए दो ऑक्सीजन है मेरे पास, तो कहाँ पे अटैच करना है इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O माइनस इधर, C डबल बॉन्ड O माइनस इधर, एंड हियर इज O माइनस। तो कार्बोक्सिलेट में नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा और यहाँ पे रेजोनेंस होने की वजह से तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे डीलोकलाइज होता है बेंजीन रिंग के अंदर, लेकिन नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन रिमेन्स द सेम। तो इसीलिए आपको हाइड्रोजन यहाँ पे लगाना है एंड सोडियम यहाँ पे, यानी प्लस माइनस। एक कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट रहेगा, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा। अब आपको क्या करना है, इसको हाइड्रोलाइज करना है, एसिड हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। एसिड हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा दैट शुड बी लाइक दिस, लेट मी राइट समवट डिफ अवे, ये रहेगा प्रोडक्ट। सो दिस इज OH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH रहेगा।
So OH and COOH are present at the ortho positions with respect to each other. तो ये बनेगा हमारा salicylic acid. The useful product for the preparation of aspirin. Aspirin prepare करने के लिए ये compound salicylic acid लिया जाता है. तो ये था पूरा mechanism for the Kolbe reaction. Hope you understood this. And next reaction I'm going to discuss, that is Reimer-Tiemann reaction. तो एक्चुअल जो मैकेनिज्म है, जो वो मैकेनिज्म के अंदर हम देखते हैं कि द जनरेशन ऑफ कार्बिन टेक्स प्लेस, बट यहाँ पे विदाउट फॉर्मिंग अ कार्बिन वी कैन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द Reimer-Tiemann reaction. Let's understand that reaction. So what do we have here? First thing, we'll write the name Reimer-Tiemann reaction. Reimer-Tiemann reaction बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सारे स्टेप्स है इसके अंदर. तो पहले मुझे लेना है फिर से फिनॉल, और यहाँ पे मुझे ट्रीट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि मुझे रिएक्टिविटी बढ़ाना है बेंजीन का. तो यहाँ पे मिलेगा मुझे सोडियम फिनेट एज यूजुअल इन द कोल्ब्स रिएक्शन, ONA, सॉरी इट शुड बी ONA, और यहाँ पे -H2O निकाल देंगे, -H2O. तो यहाँ पे प्लस साइन ऑन द सोडियम एंड माइनस साइन ऑन द ऑक्सीजन, बिकॉज इट इज आयोनिक कंपाउंड, इट्स अ सॉल्ट. दिस इज सोडियम फिनेट. नाउ अब क्या करना है हमको, वी हैव टू टेक HCCl. This is a chloroform, and this chloroform is allowed to react with the sodium finate. Now what happened here, this negative charge delocalized into a benzene ring. At the same time, the pi bond present in the benzene ring get migrated towards this electron deficient carbon. You may think that why this carbon is electron deficient. This is electron deficient because this carbon is connected with 1, 2, 3 Cl atoms which are more electronegative. And meanwhile what happens, one of the Cl get eliminated out. This is same type of reaction like a nucleophilic substitution reaction across the alkyl halides. And by that we get a product. The product is like this. Direct, skip one step and write the direct step, that is ONA plus a minus, and here will be the Cl, and here is one hydrogen. Now this compound is something very interesting. Why it is interesting? Because this carbon having 2 Cl atoms, and we have to replace this with the OH groups. And for that what I will do, that I will take 2 molecules of sodium hydroxide, 2 NaOH I will take, and by that what happens here, nucleophilic substitution reaction will take place, and the Cl is replaced by the OH group, and we will write the product. The product is simply, this is ONA, the plus or minus, and here we get C, here is OH, C, here is OH, and here we have hydrogen. Now we know that the carbon, when it is connected with the 2 OH groups, it is highly unstable, because the carbon connected with the 2 electronegative atoms, the carbon finds electron deficiency, and there is a chance of elimination of water is there from the same carbon atoms. And therefore what happens, this hydrogen oxygen bond get migrate between the oxygen and carbon, and meanwhile this carbon oxygen bond get breaks out. Okay, and by that we get here the product. The product is here, this is the benzene, and then here is ONA, the plus or minus, and this side we have C double bond O, then hydrogen, and here this OH is combined with H and forming here -H2O. Now just to acidify this, acid hydrolysis, this is acid hydrolysis. Take acid hydrolysis, the sodium get replaced by the hydrogen, and we get product. Product is very interesting here. This is OH, and we get here C double bond O and H. And previously when I talk about the Kolbe reaction, we got the C double H as a functional group, and this time we have aldehyde group, that is the same aldehyde.